Hey guys, welcome back to my channel. For all of you who are new, I'm Tanya. I came to Canada as an international student and now I'm working over here. So guys, आज का video is on one of the most requested topics, which is GIC. So GIC stands for Guaranteed Investment Certificate. And अगर आप एक student हो applying through the SDS category for Canadian student visa, then आपको definitely GIC account बनाना ही पड़ेगा. So let's talk about it in detail today. Specifically, let's talk about the things to keep in mind while you apply for your GIC. So let's get right into the video. So guys, before we get into the topics and points to keep in mind, let's talk about what GIC exactly is. एंड इसके बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगी स्पेसिफिकली, बट इन शॉर्ट GIC इज़ एन इन्वेस्टमेंट जो आप इंडिया से करते हो. बेसिकली 6 लाख की एक इन्वेस्टमेंट होती है जो आप इंडिया से ऑलरेडी कर देते हो इन अ कनेडियन बैंक अकाउंट. एंड जब आप यहाँ पे आते हो तो वो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे मिलती है. सो बेसिकली फॉर 12 मंथ्स आपको अराउंड $670 मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो हर महीने. वो आपके बैंक में आपके चेकिंग्स अकाउंट में आ जाते हैं. सो आपको जो अपने बेसिक एक्सपेंसेस है वो आप पूरे कर सकते हो इस पैसे से, even if you don't have any part-time job or if you don't have any other money. This is like the Canadian government ensuring कि आपके पास थोड़े से पैसे हैं to survive in this country even if you don't get a part-time job. Again, इसकी detailed video किस बैंक में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, क्या एग्जैक्ट कॉस्ट होती है, सारी मैं बना के यहाँ पे लिंक कर दूँगी. बट टुडे लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स टू कीप इन माइंड. पहली बात, GIC अकाउंट बनवाने के लिए आपके पास आपका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. सो फॉर पीपल हुज पासपोर्ट इज स्टिल इन एप्लीकेशन, आपके पास पासपोर्ट आया नहीं है अब तक, सो वंस यू गेट योर पासपोर्ट फिर ही GIC बन सकता है. अनदर थिंग दैट यू नीड इज़ योर कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर. सो आपका GIC एक्सेप्ट हो उसके लिए बैंक को चाहिए कि आपका कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर हो, सो दैट इट कैन कन्फर्म कि आप कनाडा में एक स्टूडेंट होने वाले हो. So these are the two things that you need. Now number 2 is name of the account holder and applicant's name needs to be the same. मतलब आपको इंश्योर करना है कि जो आप पैसे अपने इंडियन अकाउंट से भेज रहे हो कनेडियन अकाउंट में वो आपके नाम से होने चाहिए. मतलब अकाउंट होल्डर हैज़ टू बी एग्जाम्पल तानिया हेमदेव एंड द एप्लीकेंट फॉर द GIC ऑल्सो हैज़ टू बी तानिया हेमदेव. सो इफ़ यू आर गेटिंग मनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स अकाउंट तो वो नहीं चलेगा, उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है. सो यू विल हैव टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स और गार्डियंस अकाउंट टू योर अकाउंट एंड देन ट्रांसफर इट टू क्रिएट योर GIC. इफ़ यू हैव अ जॉइंट अकाउंट देन दैट्स फाइन, आप उससे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो. So once you do that and everything goes right, you will get an investment balance confirmation in your investment account, मतलब आपके Canadian बैंक अकाउंट में. So make sure to do these things, नहीं तो rejection के chances है. So number 3, again related to information. So make sure कि your residential address is the same in your GIC account, exactly same like the one in your passport. सो चेक करना कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो. एंड व्हेन यू आर मेकिंग द वायर ट्रांसफ़र तब मेक श्योर कि बेनिफिशियरी नेम जो होता है वो आपका एग्जैक्टली पासपोर्ट से मैच करता हो. मेक श्योर योर बैंक अकाउंट डज दैट. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वायर ट्रांसफ़र्स को वैसे ही थोड़े दिन लगते हैं. अलॉन्ग विद दैट जब भी आप GIC अकाउंट खोलते हो उस बैंक को भी कुछ दिन लगते हैं टू डिसाइड इफ़ दे वांट टू एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन और रिजेक्ट इट. सो इन केस बाय चांस आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा तो यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम हियर बिकॉज ऑफ वन स्मॉल मिस्टेक. सो गाइज ऑलरेडी ये जो स्टडी अब्रॉड का प्रोसेस होता है वो बहुत टाइट होता है बिकॉज वीज़ाज टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम लाइक दिस. सो मेक श्योर कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो. सो गाइज नंबर 4 इज़ मेक श्योर यू गेट अ गुड एक्सचेंज रेट. So I know studying abroad is a very expensive procedure and on top of that 6 lakhs more just for your GIC. बहुत ज़्यादा पैसा है and which is why it is important to save as much as you can in every step. So इसके लिए important है कि when you're doing these transfers you get the best exchange rate that you can. Also, in order to save money, I have a solution for you guys. So I found this startup called Foreign Admits which helps you with your GIC process. So it helps you pick a GIC account which gives you the highest returns and has the easiest process specifically for you. So they can give you 24/7 assistance in opening a GIC account, transferring your funds and obtaining the GIC certificate. Along with that, you can do your Canadian visa process with Foreign Admits for free without any service charge.
On top of that, you can get up to 5,000 off on your flight ticket if you apply through them. So guys, आपको expert help भी मिल जाती है and you save money as well. So you can definitely check them out, and if you have any more questions or you want to sign up, then I'm going to put their link in my description so you can check them out. Also, if you're looking for loan assistance or any other help related to foreign studies, then again their link is in my description. You can check it out, and I think काफ़ी international aspirants को इससे help हो जाएगी. So now moving on to our fifth topic. So number 5 is choose the correct bank account. So there are a couple of banks that provide GIC accounts to international students. So a few of them which are the most popular are Scotiabank, CIBC Bank, ICICI Bank and SBI Bank. So choosing the right bank account for you is very necessary, and सबके लिए ये right bank account शायद कुछ और हो सकता है, but there are a few things that you need to consider and decide what works the best for you. So guys, choosing the right bank account is very necessary, so make sure you do that. So if you want, I can create a specific video comparing all of the banks and telling you which is my choice, my preference, and what are the pros and cons of each one. So let me know in the comment section if you want a video like that, and I'll make sure to create it. Number 6 is save up on tax. So Indian students can save up on tax in the form of a deductible according to section 80E of the Income Tax Act. So make sure कि आप ये tax benefit लें and you save up on this tax because this is a huge chunk of money. Number 7 is complete your documentation formalities in Canada. So once you do all of this in India and then you land in Canada, तो ये पैसे आपको automatically नहीं मिलेंगे. You will have to create a personal account, a student account with the bank that you created your GIC account with. So you will have to go to the bank and complete all of the formalities over there in order to start getting your money. A lot of times you will first have to book an appointment with the bank before going in. So make sure कि ये सारी चीज़ें आप first week जब आप कनाडा में हो तभी कर दो, because जब तक आप वो नहीं करोगे आपको अपने GIC नहीं मिलेंगे and you won't have a credit or debit card. So once you create that, आपको पहले ही आपको जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है तो आपको 2000 Canadian dollars आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, and the remaining 8000 Canadian dollars आपको equal installments में over the next year मिलेंगे. So हर महीने आपको कुछ पैसे मिलेंगे which would complete the 8000 Canadian dollars. So when you're going to the bank, you will have to carry a few documents with you. So those documents would be, one, your investment balance confirmation, जो आपको जब आप GIC account बनाओगे तब मिलेगा. Another thing would be your passport, your study permit, your college acceptance letter. So ये सारी जो भी आपकी एक document folder होगा वो पूरा लेके जाना, because they might ask you for those details. Along with that, you will also create a SIN number. तो when you're creating a bank account, आपको ये SIN number भी देना पड़ेगा. So make sure to do that. So number 8, cancellation. So what happens if your student visa gets rejected? Hopefully that doesn't happen with you, but in case this happens, then आपने already 6 lakh Indian rupees, which is 10,000 Canadian dollars भर चुके हैं GIC account के लिए. So what happens to that? So don't worry guys, आपको वो refund मिल जाएगा except for the service fee that you'll be paying. But other than that, आपको सारा कुछ refund मिल जाएगा. For getting the refund, you will have to submit a proof of cancellation of your study permit. So उनको देखना पड़ेगा कि आपका वीज़ा actually reject हो गया and आपका study permit reject हुआ है. And they will also want to see a withdrawal of enrollment from the Canadian Institute to make sure कि आपका वीज़ा actually refuse हो गया है and you won't be studying abroad. Once they confirm that, then you can get your refund. Hopefully that doesn't happen to you guys and you can get your GIC account created and land in Canada happily and have an amazing journey over here once you reach. So guys, this was it for today's video. I hope I covered everything and I hope ये informational था. You got to know the things that you need to do to create a GIC account. If you still have any questions related to this, then drop them down in the comment section and I will try to answer them. And if there's anything that I missed out on, then please put that in the comment section too, ताकि बाकियों की help हो जाए. And hope you liked this video. If you did, then don't forget to like, comment and subscribe. And I will see you guys again soon. Till then, bye.